रुको 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 रुको, ये वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू हमारे फर्स्ट वीडियो पे हमको इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और जितनी भी गलतियां हमसे अपने पहले वीडियो में हुई हैं, आपके फीडबैक के बाद हम लोगों ने मेक श्योर करा है कि वो गलतियां वापस से ना हो। तो प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखे और हमें बताए कि और क्या क्या हमें सुधार करने की जरूरत है। तो अब हमारी मुलाकात होगी आपसे वीडियो के बीच बीच में, तो फोन को डाल लीजिए साइलेंट पे, हेडफोन डाल लीजिए और चाय की प्याली थाम लीजिए, क्योंकि अब ये जहाज सीधा रुकेगी रांची के एयरपोर्ट पे। So hello, what's up guys, and I hope you are well and Shubha Khair, because it's 5 o'clock in the morning and right now we are in Dehradun airport going to my hometown Ranchi, and yes, I am super excited. We have a connecting flight because there is no direct flights to Ranchi from Dehradun, so now we'll go to Delhi first and from Delhi we'll go to Ranchi. There's a layover of 2.5 hours. बस आसपास आप चिड़ियों के चिरचिराने की आवाज़ सुन सकते हैं अगर आप सुन पा रहे होंगे, बिकॉज ये बहुत सुबह सुबह का माहौल। Now I'm eagerly waiting for getting boarded. Requesting attention, we will be landing at Indira Gandhi International Airport Terminal 1. Indigo flights are now operating from all 3 terminals. Boys and girls, we welcome you at flight 606971 to Ranchi. It will take 1 hour 15 minutes to reach Ranchi.
So, after a long journey, I reached Ranchi and like seriously बता, अपना एग्जॉस्ट हो रखा था वो तो इतना सोने के बाद मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूँ, लाइक आई कैंट से यार उस समय भाई साहब मतलब हिम्मत ही नहीं था, उस समय ना चेहरे पे स्माइल तक नहीं आ पा रहा था। एंड अभी हमको गाइड करने के लिए हमारी दीदी लोग होंगी, लाइक वही हमको गाइड करेंगे क्योंकि रांची का उनको कुछ नहीं पता। सो रांची में देखते हैं कितना सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, कितना सारी चीज़ हम एंटरटेन कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा हम एंटरटेन करेंगे उतना ज़्यादा आप एंटरटेन हो पाएगा। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डू सम बॉलिंग एंड ऑल स्टफ्स, काइंड ऑफ आर्केड सेंटर। So let's enjoy. पूरे के पूरे 40 स्कोर से पूरे के पूरे 40 स्कोर से दीदी जीतते हुए। दीदी कैसा लग रहा है हारने के बाद? आपको हम स्कोर दिखाएंगे, स्कोर आपके सामने आएगा दीदी हारते हुए पहले। देख रहे हो आप, देख ये 32 और ये मुझे चीज़ है कि हाँ खेल के बहुत मजा आया अभी हम सब। तो फाइनली अब यहाँ से हम जाते हुए So how everyone, it's my second day in Ranchi. It's 7 in the morning. I was just sitting and relaxing myself. It's not like that कि मेरे को कभी-कभी फ़ोन और कैमरे की कंपनी अच्छी नहीं लगती, but sometimes you know you just feel to be alone. You just wanted to be alone. You just try to get the sukoon. So yes, obviously I really enjoy the company of phone and camera. But this time I was just chilling and relaxing. I was just trying to heal myself. As you can see, it's around me, it's just Patratu Valley. I am right now in Patratu Valley, and so let me show you the surrounding behind. One of the most enchanting place of Ranchi. As you can see behind, it's in Dasam Fall, and it's near about 44 km away from Ranchi. And for that we just drive through the NS33. We'll just get you a close-up look from my behind. We'll just step ahead.
So right now I'm here in Hundru Fall, and it's the 34th highest fall of India. So you can like this is one of the huge fall I ever seen in my life. When it comes to safety, so helmet first. Yeah, so now we are ready to move forward. So बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो नीचे आके कमेंट कीजिए। और ये हमारा पहला ट्रैवलिंग ब्लॉग है अबाउट द सिटी रांची, द सिटी ऑफ फॉल्स। एंड डोंट फॉरगेट बाबा, यू आर ब्यूटीफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय। दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं हम।